Okay. Now finding electric field from a given expression of V. See, अभी तक क्या था? Electric field is given. We are trying to find potential difference by using this relationship, right? Delta V is equal to minus E dot R. Here what? Electric field is given. We are trying to find potential difference. अभी क्या है? Potential is given. How to find electric field we have to see. Okay, उल्टा दिएगा. So आपको ये small in differential form में we know this one dv is equal to minus E dot dr in differential form में dv equal to and मैं क्या करूंगा dv is equal to minus इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऑल डायरेक्शन में है ex i cap plus ey j cap plus ez k cap dot dr vector also in all direction dx i cap plus dy j cap plus dz k cap. Okay, now dot product करो and minus बाहर ले लो. So dv is equal to how much? Minus ex dx minus ey dy minus ez dz. राइट? तो डिफरेंशियल फॉर्म में से मैं धीरे धीरे लेके आया. ओके, सपोज मान लो, सपोज इफ y and z is not changing, then dy and dz will be how much? dy and dz will be how much? Zero. Change in y and change in z will be 0, right? So we left is only x. So क्या बचेगा? dv is equal to minus ex dx. Therefore ex, electric field in x direction, is equal to minus dv by dx. dv by dx मतलब आपको पोटेंशियल देगा, you have to differentiate and put minus, you will get the electric field in that particular direction. You differentiate with respect to x है तो x करने का. But ये actually differentiation वाला थोड़ा wrong होगा. Exactly we cannot like this. Ex is equal to minus dou v by dou x. Dou x is nothing but partial differentiation. मतलब मीनिंग क्या है? विद रेस्पेक्ट टू x means indirectly y and z are constant. When you're doing partial differentiation, when you're doing with respect to x, y and z are constant. Similarly, ey will be how much? Minus dou v by dou y. Ez is minus dou v by dou z. मतलब indirectly we are doing differentiation only. The partial differentiation is differentiation only. But when you are doing with respect to z means x and y we should treat as constant. Okay. So more than one variables में partial differentiation करना पड़ेगा. Here also देखो indirectly we are doing y and z को निकाल रहे हैं. We are doing with respect to x. मतलब indirectly we are doing partial differentiation only. So this is 99%, either 100% right है. Ex is equal to minus dou v by dou x. And you know differentiation is nothing but the slope, right? So sometimes they will give the graph of v versus x. He will tell to find electric field. आपको क्या करने का? Slope find करके minus लगाओ, will get the electric field at that point. Okay. So we can write as this is slope of v versus x graph. So general format में we can write E is equal to minus dou v by dou r. It can be x, it can be y, it can be z. सो आपको एक फॉर्मूला याद रखने का. फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो आर. अगर x है तो x1 यूज करो, y है तो y यूज करो, z है तो z यूज करो. Then
Okay, so when potential is given, simply आपको differentiate करो to get the x, x y z वाला में. Okay, चलो कोई क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आएगा. Okay, देखो potential is given as v is equal to x square by 2 minus y cube by 3 plus z is given. Is telling to find electric field at that point. Okay, so here potential is given, we have to find electric field is how much, at how much, 1 comma 2 comma 0. At this point में electric field is how much. So क्या करेंगे, फर्स्ट आपको ex ey ez फाइंड करके एक जगह में पूरा कंबाइन करके लिखो. ओके, करो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्मूला क्या है, ex डायरेक्शन में माइनस डो v बाई डो x. So minus, okay, when you're doing with respect to x, y and z are constant, that's why differentiation of y cube and differentiation of z is constant, 0 हो जाएगा, only x square का करने का. And differentiation of x square is 2x by 2. तो 2 cancel, तो कितना होगा, minus x रहेगा. सिमिलर दो ex ey फाइंड करो, ey ez फाइंड करो. Sir, 2. Final 2 answer. कितना, Final 2. ओके देखेंगे. ey कितना है, ey 4. नो, मतलब लास्ट में सब्सिट्यूट करेंगे क्या, ये वाला, दिस वन डोंट सब्सिट्यूट, जस्ट डिफरेंशिएट. माइनस डो v बाई डो y. सो माइनस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब x एंड z आर कांस्टेंट, माइनस 3y स्क्वायर, राइट, माइनस 3y स्क्वायर बाई 3. सो दिस इज कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस प्लस, so plus y square. Similarly ez is minus dou v by dou z. So minus, with respect to z means ये दोनों constant 0 हो जाएगा, इस ये तो 1 है, right? So it is minus 1. Now total electric field कितना है in terms of x and I cap j cap लगाओ, minus x I cap plus y square j cap minus k cap, right? This is electric field in all the directions में है. He is telling at 1 comma 2 comma 0. Tell me, E at 1 comma 2 comma 0. Substitute 1 comma x में 1, y में 2, z में k 0. हाँ लगाओ, कितना आएगा, x में 1 लगाए तो माइनस आई कैप, y में 2 लगाए तो प्लस 4 j कैप, and here no value is there, minus k cap, right? This is electric field. He is telling to find magnitude also, he is telling to find, and you know how to find magnitude also, right? Mod कितना है, Root 17. हाँ कितना, रूट 17. 16. 16 plus 1 plus 1 18. 18. Sir, K is 0, right? k क्यों 0 है, इधर z है तो z के जगह में 0 लगा था. Here no variable is there, 1 k cap is there, 1 k cap is 1 k cap only. Okay, कुछ वेरिएबल z कुछ है तो we can substitute. Root 18 means 3 root 2. This is a electric field find कर. So when potential is given, you simply differentiate. Partial differentiation we have to do. Nothing but slope of v versus x, negative slope of, इसको potential gradient भी बोलते हैं sometimes. Potential gradient मतलब with respect to x, with respect to y, distance के साथ अगर differentiate कर रहे हैं ना, that is called potential gradient. Okay? आया समझ में आया? चलो. Like this you can go for any questions also, differentiate करके solve करने का. ये तो आता है, differentiation वगैरह आता है ना. Now we'll go for the next topic. Equipotential surface. ये नाम सुना है, Equipotential surface, किधर किधर सुना है, which topic में सुना है? Potential. Last class you only told us about हाँ, equipotential. so dipole के वजह से perpendicular में, I told you उस plane में potential is same everywhere. That is called equipotential. Name itself indicating. Equi means same potential. Okay. चलो. So definition लिखो. Locus of all points or the regions that has same electric potential. Potential is same at every point is called equipotential surface. By joining the points of same potential, we can draw equipotential surface.
they will tell to draw the equipotential surface. So first we will try to find where the potential is same. Usko मैं join करूंगा, will get equipotential surface. Locus means nothing but joining of all the points where the potential is same. I think आपका मैथ्स में भी locus चैप्टर है, हाँ, yeah. So this is theoretical topic. Equipotential surface is a theoretical topic. So, हो गया? so can we say that for equipotential surfaces, E is constant as well? V is constant, yeah. Electric field. What about Electric field, no. Only potential is constant. Electric field can be zero if the potential is constant. Okay. 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 So for equipotential surfaces, electric field Only is zero. electric field के बारे में we should not talk. Potential is constant. That is the thing. Name itself equi means equal potential. Equi electric field surface नहीं है. Equi potential surface. So this is 100% true. वो electric field zero भी हो सकती है, not zero भी हो सकती है. Okay. We will see. So आगे because there was समझेंगे. a question in the sheet, in that worksheet you gave. हाँ. Okay. Okay. Equipotential surface का. Yeah. Okay. हो गया? Covered? Yes. Shapes of equipotential surface. Shapes of equipotential surface. So first one is point charge ka. I want to know the shape. Tell me for point charge, what is the shape of the equipotential surface? For a point charge, what is the shape of the equipotential surface? मान लो r distance दूर में the potential is how much here? Because of point charge, what is the potential? KQ by R. KQ by R. Here, KQ by R. So, R distance, KQ by R. KQ by R. Okay. Now, if I join all the locus, if I join all the points which is having same potential, we will get the equipotential surface. So this is the equipotential surface, right? Tell me what is the shape of this one? For point charge, what is the shape? Circle बोलेगा? No, not circle. Not circle. We should say it is a shell, hollow shell. देखो, if it is 2r distance, then also this is the equipotential surface. If 3r distance, then also 3 equipotential surface. पूरा 3 dimensional में we have to see. पूरा shell है. Okay, how many shells it can form? So many, infinite, right? So we should say, इधर draw करेंगे. देखो, ये लिखेंगे. So this is the equipotential surface for a point charge and infinite concentric shells with charge at center. So they will ask sometimes bits में for a point charge, what is the equipotential surface? मतलब infinite concentric, मतलब same center वाला shells will be the equipotential surface when the charge is at center. So how many equipotential surface? Dotted lines we are putting for equipotential surface. अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो पैरेलली. नेक्स्ट एग्जाम टाइम में आई विल पुट बोथ, मतलब वो पुराने चैप्टर प्लस ये जो भी टॉपिक्स हो रहे ना वो ऐड होता जाएगा बार बार. इट विल बी गुड फॉर यू, बार बार रिवाइज होता जाएगा. डन. And these are electric field lines. Pulse charge ka electric field lines. This is the equivalent surface. Next. Second one is for a linear charge. Tell me,
For a linear charge, what will be the equipotential surface? Linear charge means this one. We studied already Gauss law. Man. So what is the equipotential surface for this one? Cylinder. Cylindrical. Very good. So r distance दूर में potential is same. Potential is same. So इधर एक cylinder आएगा. Right? So ऐसा cylindrical. And how many cylinders will be formed? So many, infinite, right? Infinite cylinders are formed. So we should tell coaxial hollow cylinders with linear charge as axis. Linear charge as axis, coaxial hollow cylinders. So many cylinders, infinite cylinders will be there. Coaxial means same axis के along only. All cylinders का there is same axis. Done? Okay. Now we will see the properties of equipotential surface. A theoretical topic है properties पढ़ेंगे. You tell me what is the difference in potential between the equipotential surface? 2 points at equipotential surface. I took a equipotential surface. 2 points में difference in potential is how much? Difference in potential of 2 points on equipotential surface. 0. 0. Yes. देखो, the potential difference between any 2 points on equipotential surface is 0. Suppose मान लो this is a equipotential surface. Okay. I took 2 points A and B. Now I want VA minus VB. Because VA minus VB is how much? 0. Because potential difference, name is indicating equipotential. Potential is same. दोनों differences if you take, you will get the 0 value. Okay. Now, suppose I will put a charge here on the equipotential surface. I want to move the charge from here to here. How much work is to be done to move the charge from one point to other point? Tell me. How much work is to be done in order to move the charge from one point to other point? 0. Why? Because VA minus VB into Q naught. Very good. Very good. So, no work is done by electric force in moving a charge over equipotential surface. Okay. So, matlab, if I use the concept, formula use करके, I put a charge Q naught. So, what is the potential difference formula? VB minus VA is equal to work done by external agent in order to move the charge from A to B upon test charge. Now, VA minus VB is 0 on equipotential surface. So 0 into something is 0. Therefore, work done is 0. So work कुछ करने का जरूरत नहीं है equipotential surface को. Third point. Electric field is always perpendicular to the equipotential surface at each point on the surface. So electric field is always perpendicular to the equipotential surface. Mala, this is the equipotential surface. Okay. Suppose I moved
electric, what is saying, this is the equipotential surface. Electric field is always perpendicular to the equipotential surface. Electric field is always perpendicular to the equipotential surface. So ये भी प्रूव करेंगे. Suppose मान लो I moved the charge from here to here, some small displacement dr. A surface है, equipotential surface में I moved a charge from one point to other point with a small displacement dr. Okay, we know the differential formula, right? dv, what is the relation between electric potential and field? dv is equal to minus E dot dr, right? This is the formula we learned. Small. You tell me what is dv for equipotential surface? What is the change in potential for a small point from A to B? What is dv? 0. 0. 0 is equal to minus E dot r. When will be the dot product is 0? What angle? 90. 90. So from this, E is perpendicular to dr. dr is nothing but the equipotential surface only. Surface I'm putting, right? That means electric field is always perpendicular to the equipotential surface only. Okay. That's why for a point charge, when you're seeing for a point charge, we have equipotential surface, infinite concentric shells, right? If I draw the electric, these are equipotential surfaces, right? If I draw the electric field because of positive charge, electric field is away. देखो, equipotential surface and electric field is always perpendicular. देखो, electric field when we're drawing away, always equipotential surface and electric field is always perpendicular. Every point में. तो ये नॉलेज अगर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, वी कैन ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एनीथिंग. समटाइम्स दे विल टेल टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो and then try to put the equipotential surface which is exactly perpendicular to electric field. Okay, we will see that. Draw the equipotential surface for a uniform electric field. देखो यूनिफॉर्म मालूम है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है. नाउ आई वांट टू ड्रॉ द equipotential surface. We know the property that equipotential surface should be perpendicular to the electric field. So आपको क्या करने का, ऐसा प्लेन्स ड्रॉ करना पड़ेगा. दिस वन प्लेन, दिस इज वन प्लेन. भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा है. ओके, this is the equipotential surface. Why? They are perpendicular. Equipotential surface is always perpendicular to the electric field lines. So plane ऐसा किताब वाला ऐसा. Okay, ऐसा वाला ऐसा लगा हूँ. So this is the equipotential surface. Now suppose I want to move the charge from this first equipotential surface, second equipotential surface. I want to move the charge from one equipotential surface to other equipotential surface. Whether work should be done or not. Not done. Work, you tell me. No. Shivangi? No. No work is done. Satvik, I want to move the charge from one equipotential surface to other equipotential surface. Whether work should be done or not. Okay, clarity के लिए, suppose I want to move the charge from A to B in the same equipotential surface, then work is 0. But from one equipotential to other equipotential जाने समय compulsory work should be done. Work is not equal to 0. वो अंडरस्टैंड करने का, ये ऐसे वाला क्वेश्चंस पूछेगा जानने वाला. पीपल क्या करेगा, 0 लगा के सर आई रोट वेरी वेल सर एग्जाम, क्या बोलेगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड करो. So one equipotential surface to other equipotential surface move होने टाइम में work is not equal to 0. But इसमें same equipotential surface draw move होने के में work done is 0. Okay, understood right? सात्विक, आज नींद आ रही है सात्विक, getting sleepy? हमारे क्या है, बहुत टायर्ड हो गया.
स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर दिया, कॉलेज में Something fell in my eyes. आइस फेल हो गया. ओके, नेक्स्ट. हाँ, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल. हाँ, ड्रॉ करो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल. यू नो डाइपोल, प्लस क्यू चार्ज minus q charge, separated by distance, right? Okay, I want to draw the equipotential surface for a dipole. So always equipotential surface draw करने के लिए what is required? First आपको electric field draw करना पड़ेगा. Okay, and electric field, you know, positive charge से negative charge will be there. So मान लो ऊपर में 3 ड्रॉ किया. It should be electric field में properties पढ़ा को ना symmetric रहने का. नीचे also 3 will show to draw, positive to negative. एंड सपोज पॉजिटिव चार्ज का अवे दो दो लगाए तो इधर भी 2 लगाने का. सिमिलरली इट इज टुवर्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया. नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो बोल के बोलेगा. देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आपको प्रॉपर्टी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इस कर्वेचर का परपेंडिकुलर लाइन विल बी ऐसे स्फेरिकल रहेगा. देखो दे आर परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर. ऐसा कट होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं ना, परपेंडिकुलर क्रॉस होगा. सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. मतलब स्पीयर फॉर्म होगा इस तरफ, ऐसा स्पीयर फॉर्म होगा. इधर आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, सो मैं बेसिकली स्पीयर फॉर्म होगा. आई विल ड्रॉ द डायग्राम इन दिस. तो इससे अच्छा आपको ऐसा ड्रॉ किया तो बस. हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस. और देखो एवरी एवरी स्टेप में इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. एंड इफ यू सी हियर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का गैप इसमें कम है, इसमें ज्यादा है. सो प्रॉपर्टी क्या है? देखो डिस्टेंस, देखो ये छोटा है, ये वाला बड़ा है इक्विपोटेंशियल सरफेस. व्हाई? वेयर एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्राउडेड, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज आल्सो क्राउडेड. रीजन में रहेगा. ओके, वन ऑफ द प्रॉपर्टी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये डेंस ज्यादा है ना, ये थोड़ा दूर दूर है. सो दैट्स व्हाई इक्विपोटेंशियल आर फार. बट ये डेंसर है, बहुत सारा डेंसर है, दैट्स व्हाई गैप इज लेस. ड्रा कर दे सात्विक, शो बुक में. मुझे क्या सुपर, क्या रखते हैं. नीटली बनाओ लो, यही साल में लिखने वाला है, मतलब जनवरी में लिखने वाला है वो. हो गया. नेक्स्ट. Next property I told, right? Equipotential surface are crowded together in the region of strong field. Strong field में crowded together and relatively far apart in the weaker field. That's why इधर you saw, right? एक crowded है, ये far apart weaker field है, ये वाला stronger field है. देखो
Yeah. Chalo. This one already, two equipotential surface can never intersect each other. Like, magnetic field lines, two electric field lines never intersect. I say equivalent surface also never intersect, because if they do so, then at any point of intersection, there will be two directions of electric field, which is impossible. Okay. Suppose, मान लो, this is one equipotent surface and this is one equipotent surface. मान लो they are intersecting at one point. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंट सरफेस. सपोज मान लो दे आर इंटरसेक्टिंग, इस फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा E1, एंड सेकंड सरफेस का सेम पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. एक पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल. ओके. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक एक पॉइंट का एक ही रहेगा, दो दो नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई because they do so, then at any point of intersection there will be two directions of electric field, which is impossible. Okay, next. Equipotential volume, small concept हो जाएगा concept. Equipotential volume, देखो, suppose मान लो एक शेल है और स्पीयर है, मान लो. ओके. द एक कंडक्टर है, कंडक्टर स्पेरिकल कंडक्टर है, चार्ज विल रिसाइड्स ऑन द सरफेस, राइट? Okay. Electric field inside the shell is how much? Conducting hollow hoने दो, solid होने दो. Inside electric field is how much? Shell के अंदर में electric field is how much? I told you on the day, electric field is coming towards you. You have to escape from electric field. What should you do means you should go in a conductor. Inside conductor if you sit, the electric field cannot come in. Electrostatic shielding बोल के बोला ना. So inside electric field is zero everywhere. That is पक्का. पर conductor में electric field is zero. Okay. मान लो I am taking 2 points A and B. Okay. So R distance दूर में. Now a definition लगा के potential difference definition. What is the relation between potential difference and electric field? Tell me. Delta V, mod delta V is equal to mod लगा रहा हूँ E dot R. R is the distance from one place to place. And tell me what is the electric field inside is zero. Zero is equal to potential difference कितना होगा? VB minus VA मान लो. Mod लगाना. Therefore implies VA is equal to VB. देखो, potential of A and B are same. Same concept if I take the three C point also. If I take R distance, if I apply potential difference between them, mod delta V is equal to E dot R, and mod, this is 0, mod VC minus VB is equal to 0. Therefore implies VC is equal to VB. Matlab, you should understand that electric field is 0 completely, but potential is same everywhere. Here. That's why equipotential volume बोलते हैं. Equi means equal, potential volume, complete volume में potential is same. Okay, लिखो. So V is constant inside conductor. Inside conductor.
So मैं so potential constant means electric field इसमें zero होगा, right? Because if I apply that relation between electric potential and electric field, there इसमें zero है equipotential volume. Okay, चलो now करो question. A circle is drawn with a charge q at center. Charge q center में लगा है. As shown, what is the work done in moving a charge q naught from B to C? So I put a charge q naught here. How much work is done? I want to move from B to C to if circumference of a circle. मतलब I want to move this charge along this circumference of a circle from here to here. What is the work done? Tell me. First case में. Work done in moving a charge from B to C along the circumference of a circle. First case में. If this is the charge q, r distance दूर में potential is same, potential is same, potential. मतलब indirectly if I join all the points, this surface is called as what? This is called as equipotential surface. In equipotential surface में, what is the work done to move the charge from one point to other point? Is zero. So answer is zero. देखो, मैं इतना सोच रहा हूँ. Work done is zero. Okay. Now try to find B to A to C. Suppose I move the charge from B to A and A to C. Then what will be the work done? Instead of circumference, I moved from B to A and A to C. सादिक बोलो. I want to move the charge from B to A and A to C. देखो, inside में potential is same or constant? Same. Inside is potential same. मतलब VB is equal to VA only potential. When apply potential difference का formula, what done is how much? Zero. Oh, zero only answer. So answer is zero. समझ में आया? देखो, since VB is equal to VA, if I apply the potential difference, I want to move the charge from B to A. So VA minus VB is equal to work done by external agent in order to bring the charge from B to A upon test charge. VA equal to VB, right? So zero. That's why it is called equipotential volume. Okay. Now we will see electric potential. हो गया. Electric potential due to charge spheres and shells. Very important topic. Charge spheres and shells. So इसमें क्या है? लेसन का नाम electric potential capacitance, right? So potential and potential energy होने के बाद the first part will be done. Second part will be capacitance. They're still doing in the first chapter only, or they came to second chapter? आप लोग का शिवंगी and Sanvi, they came to second chapter? Yes, sir. Oh, then the first में कर रहे हैं? Okay. Understood है ये वाला? हो गया? Now electric potential due to charge spheres. Electric potential due to charge sphere, conducting spheres. Conducting spheres का specialty क्या है? The charge will resides on the inner surface or outside surface. Charge resides on the outer surface only, right? Inside charge नहीं रहेगा. पर conducting है तो, okay? Okay. Now our interest is to calculate the potential outside the sphere, surface में and inside the sphere. Okay? Derivation भी करेंगे so that आपको easy हो जाएगा.
ओके, आउटसाइड पॉइंट देखो, इसमें थोड़ा डेरिवेशन करने वाला, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, इजी हो जाएगा. चार्ज विल रिसाइड्स ऑन द सरफेस. ओके, मुझे इधर से आउटसाइड पॉइंट में इधर प्लस क्यू चार्ज इज देयर. ओके, मतलब मान लो चार्ज, मतलब ठीक है, इधर से कितना डिस्टेंस दूर में, आर डिस्टेंस दूर में, दिस आर, इधर से आर डिस्टेंस दूर में आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी. ये शेल है, ओके, कंडक्टिंग शेल है. हाँ, नो टेल मी टोटल चार्जेस क्यू, total charges q. How to find potential there? How to find potential because of this charge? I want outside point, मतलब indirectly r is greater than capital, right? r is greater than capital. Okay, so हम लोग क्या यूज करने वाला है? We will use the relation between electric field and potential. We will try to find the potential at that point p, relationship यूज करके. Okay, हाँ, ओके. नो क्या करने वाला है? इधर से याद है, इन्फिनिटी में जाके आई वॉन्ट टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम देयर टू हियर, द पॉइंट पी. ओके, बिकॉज आपको रिलेशनशिप में डेल्टा वी चाहिए ना, डेल्टा वी के लिए 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड. दैट्स वे आई एम गोइंग टू इन्फिनिटी एंड आई एम ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी. ओके, नाउ डेल्टा मतलब इनडायरेक्टली वी आर गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी. ओके, नाउ अप्लाई डेल्टा वी का फॉर्मूला लगाओ, Vp माइनस V इंफिनिटी. रिलेशनशिप चाहिए, नॉट दैट फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला नहीं है, रिलेशनशिप है. डेल्टा V के जगह में Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर फ्रॉम वेयर टू वेयर, इंफिनिटी टू पॉइंट P. राइट, समझ में? वेयर डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट R, राइट? वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन के लिए. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट करो. मान लो, see r vector is like this and dr vector is also in the same direction, dr vector. Okay, now tell me, electric, because of positive charge, electric field is like this one away. So what is the angle between them? Dr and electric field angle is 0. 0. So cos 0, substitute karo and do the derivation, and v at infinity is 0. So potential at point p chahiye, minus e dr cos 0. Okay, and electric field is how much? Electric field कितना है? बिकॉज ऑफ दिस शेल में आउटसाइड पॉइंट में कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी डन, राइट? स्पीयर का याद है, आउटसाइड सरफेस इनसाइड बोल के वी डन. हाँ, इट इज एक्टिंग लाइक ए पॉइंट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट. शेल वाला बहुत फेमस वाला है, नॉन कंडक्टिंग वाला बड़ा फॉर्मूला है थोड़ा, बट शेल वाला है बहुत फेमस. चल में अनम्यूट करके बोलो सो दैट आई कैन लिसन. आर स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला ओनली. याद रखो, आउटसाइड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, सरफेस में के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0. दैट इज द फॉर्मूला, राइट? हाँ, नाउ इसका ई के जगह में लगाओ एंड सॉल्व. पी इज एट आर डिस्टेंस, राइट? हाँ, नाउ सब्स्टिट्यूट करो, माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर. नाउ सॉल्व एंड टेल द आंसर. के क्यू बाहर ले लो, 1/r स्क्वायर, आर को ऊपर ले तो r पावर -2 इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन ऑफ r पावर -2 इज -1/r infinity to r. So minus of minus plus k q, upper limit minus lower limit, 1/r minus 1 by infinity. 1 by infinity is 0. So therefore it is k q by r. देखो वेरी सिंपल, ए भी पॉइंट चार्ज हो गया, के क्यू बाय आर. मतलब शेल में याद रखो, कंडक्टिंग शेल में आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, आउटसाइड पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर. वेरी सिंपल. ये बहुत लाइक करते हैं पीपल, कंडक्टिंग का बहुत अच्छा लगता है के क्यू बाय आर. सरफेस में कैन टेल में, सरफेस में कितना होगा पोटेंशियल एट सरफेस? सो दिस इज आउटसाइड पॉइंट, राइट? आउटसाइड पॉइंट इज के क्यू बाय आर. ओके, सरफेस में कितना होगा? सरफेस में when the point P is coming closer, the R is decreasing. Surface में the smaller will become capital. So it is K Q by capital.
ए सरफेस में। नाउ टेल मी इनसाइड कितना होगा, इनसाइड कितना होगा? 0. यस, इनसाइड इज, इनसाइड का करो, इनसाइड भी डेरिवेशन कर लो, r is less than r. Okay, so I'm take general point. This is a conducting shell, so charges on resides on the surface, सेंटर से रेडियस r है, इधर से r डिस्टेंस दूर में, इस पॉइंट p में I want the potential at this point. So here I'm taking because I'm using the relation between delta v and r, right? So 2 points are required. So 1 point, now here I am not taking infinity because infinity से सरफेस से p से अच्छा, बिकॉज बाउंड्री आया ना, बाउंड्री में आपको इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट्स व्हाई यू शुड टेक फ्रॉम सरफेस टू p. सरफेस में पोटेंशियल यू नो ऑलरेडी, ओके, सरफेस टू p लेके वी विल ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप, मतलब वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन फ्रॉम सरफेस टू p. नाउ टेल मी डेल्टा v कितना होगा? vp माइनस vs इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E dot dr, and integration is from surface to point p, right? Surface to point p. हाँ करो. Now surface का फॉर्मूला यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इनसाइड में? 0, ये 0 हो जाएगा, मतलब vp minus vs is equal to 0. Therefore vp is equal to v at surface, and surface का फॉर्मूला यू नो kq by कैपिटल, मतलब v inside फाइनल कितना आया? kq by r. मतलब इनडायरेक्टली व्हाट इज हैपनिंग, इनसाइड में kq by r, सरफेस में आल्सो kq by r. इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है ना, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम में वही बोला ना, दिस ओनली. सो याद रखो, आउटसाइड इज kq by स्मॉलर, सरफेस में kq by कैपिटल, इनसाइड आल्सो kq by कैपिटल. एंड इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, कॉपी वाला, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ v वर्सेस r, कैसे रहेगा? From inside to outside the potential is constant, that is how much? kq by capital. And outside में kq by smaller, right? मतलब inverse relation, right? k v is inverse proportional to 1 by r, inverse relation. This is the graph for potential for shell, conducting shell का. नॉन कंडक्टिंग भी करने वाला है, बट बिफोर दैट वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस. ये फॉर्मूला पढ़ के रखो, वी डन टिल 7th फॉर्मूला तक, वी डन इन आवर फॉर्मूला शीट में 7th फॉर्मूला तक वी डन. अंडरस्टूड?